Okay, today we'll start with the next part of the actinoid. Now, first we'll say the first meaning. We'll say what is transuranic elements. What is transuranic element? The transuranic element means what? Now we know that uranium. Z means atomic number is 92. Uranium Z atomic number 92. So the elements with atomic number greater than 92 are called transuranic element. What is the first point I've said here? The element with atomic number greater than 92, जिनका atomic number, see uranium का atomic number 92 है, तो जिनका atomic number 92 के बाद आ रहा है, जो एलिमेंट 92 के बाद आ रहा है उन्हें हमें क्या बोलना है? ट्रांसयूरानिक एलिमेंट. The element with atomic number greater than 92 are called as a transuranic element. Okay, now which are the example of transuranic elements? So I'll just show you all the table. See, in the last lecture, we have seen the first is actinium, second one is thorium, protactinium, and then uranium. तो यूरेनियम का atomic number 92 है. तो यूरेनियम के बाद जो भी एलिमेंट आ रहे हैं जैसे कि नेपच्यूनियम Np, plutonium Pu, americium Am, curium, they all are transuranic element. तो यूरेनियम के बाद जो भी एलिमेंट्स आएंगे उन्हें हमें क्या बोलना है? Transuranic element. Let us write down the name and the atomic number. The first example I can say neptunium. Neptunium, whose atomic number is 93 and symbol is Np. Second one is plutonium, whose atomic number is 94 and symbol is Pu. Americium, whose atomic number is 95 and the symbol is Am. And I'll take one more, curium. Atomic number is 96 and Cm, but you can just continue till 103. Okay, are called as a transuranic element, correct? So like that, but you can just remember one or two example with the symbol. Atomic number you did not remember, you did not learn, it's okay, because in the exam they'll provide, but you should know the name of the element and its symbol. Neptunium is Np, plutonium is Pu, americium is Am, and curium is Cm. So what, I'll repeat once again. What is transuranic element? The element with atomic number greater than 92 are called as so here what is a transuranic element? The element with atomic number greater than 92 are called as a transuranic element, that is neptunium, plutonium, americium, and curium. Like that we can go till 103, but we are having
At least 3 or 4 examples are more than sufficient. So written about the transuranic element. Next, we'll go for next heading. Will be application of actinoids. Application of actinoids. What are the application? Where they are used. The first one we can say we find the use of actinoid in we find the use of actinium in we find the use of actinoid in our everyday life. We find the use of actinoid in our everyday life. Like for example, what? For example, TH4 oxide. TH4 oxide. TH4 oxide means what? THO2. THO2 means what? Thorium oxide. See, either it can called as what? Thorium 4 oxide, or it can be also called as what? THO2. The formula on its name is what? Thorium oxide. So thorium oxide with, you write any one, either you write TH4 oxide, or you write THO2, or you write thorium oxide, any one. Thorium oxide is with 1% CEO2. CEO2 is called as सीरियम ऑक्साइड. मतलब थोरियम ऑक्साइड लेना है और उसका क्या मिक्स करना है हमें? सीरियम ऑक्साइड. सो थोरियम ऑक्साइड, आइदर यू राइट थोरियम 4 ऑक्साइड, और यू राइट THO2, और यू राइट थोरियम ऑक्साइड. इनमें से कोई भी एक लिख दो. So thorium oxide is with 1% CO2. CO2 is called as what? Cerium oxide was used as a major source of indoor lighting before incandescent lamp came into existence. See here, मतलब हम लोग क्या करते थे? थोरियम ऑक्साइड को is mixed with 1% cerium oxide. Thorium oxide is mixed with 1% cerium oxide and was used as a major source of indoor lighting. For indoor lighting, major source of indoor lighting. Indoor lighting मतलब हमारे घर में जो पहले ट्यूब्स, सी बिफोर व्हाट? बिफोर इनकैंडिसेंट लैम्प. मतलब हमारे घर में यहाँ पे हम जो बल्ब वगैरह यूज करते हैं, ट्यूबलाइट यूज करते हैं, लेकिन उसका डिस्कवरी होने के पहले हमें क्या यूज करना पड़ता था? इंडोर लाइटिंग के लिए मिक्सचर ऑफ थोरियम ऑक्साइड एंड सीरियम ऑक्साइड हम लोग यूज करते थे. मतलब nowadays we use the bulb, tube light, and the bulb and tube light are called as what?
इनकैंडिसेंट लैम्प, मतलब बल्ब और ट्यूबलाइट डिस्कवर होने के पहले we used to use the thorium oxide with 1% of cerium oxide as a major source of indoor lighting. Major source of indoor lighting before incandescent lamp came into the existence. Okay, ये हमारा applications of actinoids है. Okay, actinoids. Next we'll go for the heading. Yes, next we'll go for similarities between lanthanides and actinoids. Lanthanoids और actinoids के बीच में क्या क्या similarities है? What are the similarities between lanthanoids and actinoids? Okay, now what are the similarities we'll see here? The similarities between the lanthanides and actinoids. Now what is similarity? The first one, both the series have a common oxidation number of +3. Means lanthanide also shows oxidation number of +3 and actinoid also shows the oxidation number of +3. So both the series shows a +3 oxidation state. Second, in both the series, the f orbitals are filled gradually. मतलब lanthanide में कहाँ पे? Lanthanide में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री करता है? In lanthanide, electron enters into which orbital? 4f. And in actinoids, the electron enters into which orbital? 5. मतलब in case of lanthanide, the electron enters into 4f orbital, and in case of actinoids, the electron enters into which orbital? 5f orbital. And electron enters from what? F1 to F14. यहाँ पे भी क्या होगा? F1 to F14. So here both the series, in both the series, the f orbitals are filled gradually. F orbitals are filled gradually. मतलब one electron will enter at a time. Third, the ionic radius of the element in both the series decreases. Lanthanide में भी क्या होता है? When I go from lanthanum to lutetium, मतलब when I go from left to right, the atomic or ionic size goes on decreasing with increasing atomic number. The atomic number बढ़ते जाएगा, लेकिन यहाँ पे size क्या होगा? So here normally what we are atom, मतलब when we go from left to right, atomic number increases, but atomic size decreases. Atomic size decreases. The atomic number will increase, but atomic size will decrease, and that is called as a lanthanide contraction or actinoid contraction. What we've seen here, ionic radius of the element in both the series decreases with in increasing atomic number. मतलब atomic number बढ़ते जाएगा, but उनका size क्या होगा? Decrease होगा. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड के लिए बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और एक्टिनॉइड के लिए बोलते हैं हम लोग एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट, the electronegativity, the tendency of the element to attract electron. The electronegativity of all the element in both the series are low. मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एंड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे मतलब खुद के इलेक्ट्रॉन भी इजीली डोनेट करेंगे. So therefore they are highly reactive. So the electronegativity of all the element in both the series is low. That they have more tendency to lose electron easily. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो का मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करेंगे. इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे मतलब दे आर हाईली रिएक्टिव. नेक्स्ट, द नाइट्रेट, मतलब द नाइट्रेट मतलब इनके नाइट्रेट्स, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के नाइट्रेट्स, परक्लोरेट्स एंड सल्फेट of all the element are soluble. Of all the elements are soluble, मतलब वाटर में डिसॉल्व होंगे. मतलब नाइट्रेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, परक्लोरेट्स ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड,
sulfates of lanthanoids and actinoids, they all are soluble, while the hydroxide, fluoride, and carbonates are insoluble. मतलब lanthanide hydroxide, actinoid hydroxide, lanthanide fluoride, actinoid fluoride, lanthanoid carbonate, actinoid carbonate, they are insoluble. मतलब nitrate, perchlorate, and sulfate are soluble in water, and whereas hydroxide, fluorides, and carbonates are insoluble. So these are the similarities between lanthanoids and actinoid. What is similarities here? The first one, both the series have the +3 oxidation state. Second, the both the series, the f orbitals are filled gradually. Then ionic radius of the element in both the series decreases with increasing atomic number. Electronegativity of all the element in both the series is low, and therefore they are said to be highly reactive. And next, the nitrates and perchlorates and sulfate of all the elements are soluble, while the hydroxide, fluoride, and carbonates are insoluble. So these are the similarities between the lanthanoids and actinoids. Okay. Now we'll go for the next heading, differences between lanthanoids and actinoids. What are differences there? Differences between lanthanoids and actinoids. Okay, now we'll see what is the difference between lanthanoids and actinoid, and it is one of the very important question which they ask in the exam. Difference between lanthanoids and actinoid. What is the first one? Lanthanoid, see, we know that lanthanoid shows oxidation number of +3, but along with +3 और कौन से oxidation number है +2 and +4. So we can say here lanthanoid shows a maximum oxidation state of +4. मतलब लैंथेनॉइड में ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा रहेगा? +4 रहेगा, +4 रहेगा. लेकिन एक्टिनॉइड्स में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करोगे तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कहां तक रहेगा? +3, +4, +5, +6 एंड टिल +7. मतलब what we can say, in lanthanoid the highest oxidation state is of +4, whereas in actinoids the highest oxidation state is of +7. +7. Second, lanthanoid do not form complexes easily. मतलब जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे कंपाउंड लैंथेनाइड इजीली फॉर्म नहीं करता है. लैंथेनॉइड डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इजीली. मतलब लैंथेनाइड हमारे कॉम्प्लेक्स मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स है ऐसे कंपाउंड इजीली फॉर्म नहीं करेगा. But actinoids have a greater tendency to form complexes with the ligand. मतलब actinoids complex compound easily form करेगा किनके साथ? ligands के साथ. लेकिन ligands क्या है इनके बारे में मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा. ठीक है, खाली इतना ही अभी ध्यान में रखना. Lanthanoids do not form complexes easily, and actinoids have greater tendency to form the complexes with the ligand. All lanthanoids are radioactive except promethium. करेक्ट. मतलब सारे लैंथेनाइड रेडियोएक्टिव है लेकिन एक्सेप्ट प्रोमिथियम, whereas all actinoids are radioactive. मतलब सारे actinoids रेडियोएक्टिव है, लैंथेनाइड भी सारे रेडियोएक्टिव है लेकिन एक्सेप्ट वन. Then lanthanoids do not form oxocation. Lanthanoids do not form oxocation, whereas actinides form oxocation. Oxocation मतलब element with oxygen and positive charge. Element with oxygen and positive charge are called as the oxocation. See, plutonium with oxygen plus charge, neptunium with oxygen plus charge. So here lanthanoids do not form the oxocation. Actinides can form the oxocation. Next, most of the lanthanides are colorless. They are like white in color, transparent. Most of the lanthanides are colorless in nature, but actinides are colored iron. Actinoids are colored iron. So this is the distinguish between lanthanoids and actinoids. Again, I'll repeat.
Lanthanide shows a maximum oxidation number of +4 and actinoid shows the maximum oxidation number of +7. Lanthanoid do not form the complexes easily. Actinoid form the complexes easily. All lanthanoids are radioactive except promethium, but all actinoids are radioactive. Lanthanoids do not form the oxocation and actinoids can form the, आप actinoids बोल सकते हो, actinides बोल सकते हो, can form the oxocation. Most of the lanthanides are colorless. Most of the lanthanoids are colorless, but actinides are colored. मतलब actinides को colored है, इनको color नहीं है. तो ये हमारा था distinguish between lanthanoids and actinoids. We'll go for the next heading. Okay, we'll just see the meaning of the post-actinoid element. Now we know that here element with atomic number 90, that is thorium 2103. Lawrencium. Element with atomic number 90 thorium to 103 lawrencium are called as actinoids. Are called as the actinoids. Correct? Element with atomic number 90 to atomic number 103, that is from thorium to lawrencium, are called as the actinoids. So the elements from 104 to 118, elements from 104 to 118, मतलब 103 के बाद 103 के बाद 10 because last element हमारे पास 118 है. So 104 से 118 तक. So the element from 104 so the element from 104 to 118, मतलब 103 is the lawrencium, 103 is the lawrencium and 104 से लेके 118. So the element from 104 to 118 are called as post actinoid, are called as post actinoids element. Correct? Because 103 तक actinoids है, लेकिन 103 के बाद मतलब 104 से लेके 11 element, these elements are coming after actinoid and therefore they are called as a post actinoid element. Okay, so element number from 104 to 118 are called as a post actinoid element. They are called as they are included as post actinoids. They are included as a post actinoids because similar to actinoid elements, they can be
synthesize in the nuclear reactions. They can be synthesized in the nuclear reaction. So what is the 2 point? This is the first point, and this is the second point. What is the second point we have said? Why we call them as a post-actinoid? The first thing is what? Up to 103, we are having the element they are called as actinoid. Correct. So those elements from 104 to 118 are called as the post-actinoid element, and these elements from 104 to 118 shows their properties similar to actinoid. The element from 104 to 118 show the properties similar to actinoid, and therefore they are included called as what? Post actinoids. They are called as a post post actinoid because similar to actinoids element, and they can be synthesized, they can be prepared in the nuclear reaction or the nuclear reaction. Abnormal reactions nahi. They can be prepared by using which reaction? They can be prepared by using a nuclear reaction. Okay, they can be prepared by using nuclear reaction. तो ये हमारा एक small paragraph है, इतना important नहीं है, खाली just इतना ध्यान में रखना कि जो elements actinoids के बाद आते हैं, that is from 104 to 118 are called as a post-actinoid element. We call them as a post-actinoid element because their properties or they are similar to actinoid, and they can be synthesized by the nuclear reaction. They can be synthesized by using what? Nuclear reaction. तो ये हमारा post-actinoids के बारे में. Okay. अब एक हम एक रफ स्केच देखेंगे. This is a sketch of the periodic table, and we know that extreme left side element are called as the S block element. These elements are called as the D block element, and here these elements are called as the P block element. P block element, correct? Now here we have to show the one table. See, normally we know here this is group 1 and group 2. This is group 3, group 4, and so on. And then here we have the period 1, period 2, period 3, and then 4, 5, 6, 7. And we know here we are having the element called as lanthanide, and here we are having the element called as actinoid. Group number 3, period number 6, we are having lanthanide. Group number 3 and period number 7, we are having actinoid. So now we have to see this is lanthanide. और lanthanide के पहले कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? S block. Lanthanide के पहले कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? S block. So these elements, the S block element are called as S block element are called as. So S block element हमारे यहाँ पे है. S block element are called as pre transition. S block elements are called as pre-transition element. तो ये हमारे lanthanoids है, और ये 3, 4 से लेके 12 तक इन्हें हम ट्रांजिशन बोलेंगे. ये lanthanides है, ये प्री ट्रांजिशन एलिमेंट. और यहाँ पे इस सारे ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स है, we call them as a, ये जो है 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक D block element, and the D block element are called as a transition एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट. तो अभी हमें देखना है कंपैरिजन कि जो लैंथनाइड के पहले एलिमेंट्स है, जो लैंथनाइड्स के पहले एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, जिसे हम क्या बोलेंगे? प्री ट्रांजिशन एलिमेंट. बीच में कौन आ रहा है? लैंथनाइड आ रहा है यहाँ पे. और इनके बाद यहाँ पे सारे ग्रुप ब्लॉक्स में कौन आ रहा है? ट्रांजिशन एलिमेंट आ रहा है. तो अभी हमें देखना है सिमिलैरिटीज बिटवीन. ये क्या क्या सिमिलैरिटीज है? सिमिलैरिटीज बिटवीन, और सम सिमिलैरिटीज नहीं बोलूंगा मैं, सॉरी, कंपैरिजन बिटवीन, कि ये हमारे प्री ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और ये बीच में लैंथनाइड्स है. इसके बीच में हम लोग कंपैरिजन करेंगे. लैंथनाइड के पहले, मतलब ये हमारे दिस कंप्लीट ग्रुप, ये हमारा जो बॉक्स है,
दिस कंप्लीट बॉक्स इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन इसमें दो बॉक्स में कौन सा एलिमेंट है, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड। तो लैंथेनो हमें किसमें कंपैरिजन करना है, लैंथेनॉइड के पहले वाले जो एलिमेंट्स है उन्हें हमें क्या बोलेंगे, प्री ट्रांजिशन एलिमेंट। लैंथेनाइड के बाद में सारे बॉक्स में जो एलिमेंट है उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। और बीच में यहाँ पे क्या आ रहा है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड। लेकिन हमें कंपैरिजन करना है, हमें प्रॉपर्टीज का कंपेयर करके बताना, किसमें कंपेयर करके बताना है, प्री ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब ये एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब ये एलिमेंट, और लैंथेनाइड के बीच में कंपैरिजन करना है। ओके, सो आई जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट हेडिंग। The next heading we can say the comparison between, some comparison between pre-transition lanthanoids and transition metal. The comparison between pre-transition मतलब lanthanoids and transition का क्या क्या comparison करो। तो here some comparison, इनके बीच में comparison करना है। तो क्या क्या comparison रहेगा, तो I'll just see here or I'll just make a separate table. Comparison between, some comparison between pre-transition element, lanthanoids and transition metal. तो इनके बीच में comparison क्या है, I'll write some common point. Okay, first okay, now what is the comparison here, the pre-transition मतलब कौन से element जो group 1 और 2 में आते हो। okay, again I'm showing here, see the element of the group 1 and 2, group 1 and 2 element are called as what, pre-transition element। ये हमारे lanthanides है, और ये बाकी के elements कौन से element है, transition element। तो इनके तीनों के बीच में comparison करना है। तो what is comparison here, see first the pre-transition element मतलब हमारे S block element they shows what monovalent, मतलब एक ही वैलेंसी बताएंगे। कौन सी एक ही वैलेंसी, अगर हमारा एलिमेंट ग्रुप 1 का है तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ग्रुप 1 एंड +2 फॉर ग्रुप 2। मतलब अगर ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा बताएगा, +1 बताएगा, और ग्रुप 2 का अगर कोई भी एलिमेंट रहेगा तो +2 बताएगा। सो एसेंशियली मोनोवैलेंट, मतलब इनका एक ही वैलेंसी है। लैंथेनॉइड में क्या हो रहा है, एसेंशियली सबका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा आएगा, +3 आएगा। लैंथेनाइड में सबका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, लेकिन कोई कोई एलिमेंट +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन नंबर भी बताएंगे, कोई कोई एलिमेंट +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन नंबर भी बताएंगे, करेक्ट। और जो ट्रांजिशन मेटल्स है they will show the variable मतलब बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर +3 +4 +5 +6, तो they will show। what is the first point here, कि हमारे जो S ब्लॉक एलिमेंट है they will show only one valency, और वो भी कैसे, group 1 will have which oxidation number +1 और group 2 will have which oxidation number +2। लैंथेनाइड कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे, +3, लेकिन कोई कोई एलिमेंट कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे, +2 एंड +4, और ट्रांजिशन विल शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड पॉइंट, सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन ग्रुप, मतलब अगर हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1 विल शो द सिमिलर प्रॉपर्टी, ऑल एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 2 विल शो सिमिलर प्रॉपर्टी। तो एलिमेंट ऑफ द गिवन ग्रुप हैज अ सिमिलर प्रॉपर्टी, मतलब ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। देखो यहाँ पे, ये अगर हमारा ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 में कौन आता है, यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके सबकी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। ग्रुप 2 में यहाँ पे कौन आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, के सबके प्रॉपर्टी सेम रहेंगे। सो हियर सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन ग्रुप, लैंथेनॉइड में भी सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, लैंथेनॉइड में भी सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रहेंगे, लेकिन ट्रांजिशन में क्या होगा, सब्सटेंशियल चेंजेस इन द प्रॉपर्टी, मतलब उनके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, चेंज होंगे। मतलब कैसे, अगर एलिमेंट यहाँ पे ग्रुप 3 के एलिमेंट है तो उनके प्रॉपर्टीज अलग है, ग्रुप 4 के प्रॉपर्टीज अलग है, ग्रुप 5 के प्रॉपर्टीज अलग है, या मे बी सबके प्रॉपर्टीज अलग अलग है। सो व्हाट इज सेकंड पॉइंट, सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ गिवन ग्रुप, सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉर लैंथेनाइड, बट इन ट्रांजिशन द सब्सटेंशियल चेंजेस इन अ प्रॉपर्टीज। द नेक्स्ट वन, यहाँ पे वापस आ रहा है, हमारे ग्रुप
1 and 2 के elements they will show no ligand field effect. यहाँ पे हमें ligand field effect देखने के लिए नहीं मिलेगा. What is ligand? I'll explain in the next chapter. No ligand field effect will be observed. यहाँ पे भी insignificant, यहाँ पे भी क्या रहेगा, insignificant ligand field effect, मतलब यहाँ पे भी ligand field effect नहीं रहेगा. लेकिन डी ब्लॉक में हमें क्या देखेगा मिलेगा, substantial ligand field effect देखने के लिए मिलेगा. substantial ligand field effect मतलब ligand field effect प्री ट्रांजिशन मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए नहीं रहेगा. लिगैंड फील्ड इफेक्ट लैंथेनॉइड्स के लिए नहीं रहेगा, लेकिन लिगैंड फील्ड इफेक्ट हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए देखने के लिए मिलेगा. देन ज्योमेट्री, हमारे जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्री ट्रांजिशन एस ब्लॉक एलिमेंट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी इन ज्योमेट्री, मतलब उनका ज्योमेट्री चेंज होते रहता है. लैंथेनॉइड्स के लिए भी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन ज्योमेट्री, उनका भी ज्योमेट्री चेंज होते रहता है. लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट हैज अ फिक्स ज्योमेट्री, ट्रांजिशन एलिमेंट का ज्योमेट्री फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उनके पास क्या है, लिगैंड फील्ड इफेक्ट है. लिगैंड फील्ड इफेक्ट. अगेन आई विल रिपीट, द एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब प्री ट्रांजिशन एलिमेंट हैव गॉट फ्लेक्सिबिलिटी इन ज्योमेट्री. लैंथेनॉइड्स हैव आल्सो गॉट फ्लेक्सिबिलिटी इन ज्योमेट्री, मतलब उनका ज्योमेट्री चेंज होगा, ज्योमेट्रिकल शेप चेंज होगा. लेकिन transition element has got fixed geometries because of ligand field effect. And next point, pre-transition element, pre-transition will not show magnetism, no magnetism. Lanthanoid will show the magnetism, and transition element will also show the magnetism. Again I'll repeat, मतलब हमारी जो प्री ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये एलिमेंट ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बताएंगे, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएंगे और ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएंगे. सो व्हाट इज हियर, दैट नो मैग्नेटिज्म फॉर प्री ट्रांजिशन एलिमेंट, the lanthanide shows the magnetism and transition metal also shows the magnetism. So this is like a comparison between what, a pre-transition element, lanthanoids and transition, इनके तीनों के बीच में हम लोग comparison कर रहे हैं. Okay, so with this we have finished the chapter, we have finished with the topic inner transition element, and so that with this we have finished this complete chapter of transition and inner transition element. Okay, we are done with it, and next lecture we start with the new topic. Okay, so I'll end over here.